श्री राम। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दीपा मिस्त्री और आप देख रहे हैं गोल सिटी न्यूज। दर्शक मित्रों, इस वक्त मैं वलसाड़ के कल्याण बाग 4 रास्ता पर उपस्थित हूं, जहां पर रामनवमी को लेकर रिक्शा चालकों के द्वारा क्या सुविधा किया गया है। तो आइए जानते हैं रिक्शा चालक के प्रमुख से उनका क्या कहना है, रामनवमी के लिए क्या क्या तैयारी किया गया है। जी जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। वलसाड़ रिक्शा स्टेशन के तरफ से रिक्शा स्टेशन वेलफेयर જે સુનિલભાઈ પ્રમુખ અમારે આજે 2015ના રોજ થી આ કાર્યક્રમ ચાલુ છે। વલસાડ કલ્યાણબાગ અહીંયાથી તિથલ સાંઈબાબા મંદિરે આવવાના જવાના તમામ પબ્લિકોને ભક્તજનોને આવવાના જવાનો ફ્રી સેવા રાખેલા છે। સવારે 8:30 થી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી શોભાયાત્રામાં તમામ ભક્તોને જે ભાગ લીધેલા હશે એમને અહીંયા છાશના પાણીની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવેલા છે। તમામ ભક્તોને આપણા તરફથી નમ્ર વિનંતી છે કે એ શોભાયાત્રામાં સામેલ થાય ને રિક્ષા સ્ટેશન તરફ સેવા કરવાનો મોકા આપે ને અહીંયા તમામ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે। એ દરમિયાન અહીંયા બધા લાભ લઈ શકે। जय श्री राम। जी, आपका नाम? सुनील पटेल। जी, रामनवमी को लेकर क्या क्या तैयारी की गई? रामनवमी के लिए हम लोग 2015 से आज तक मतलब ये 11 साल पूरा हो गया है जी। तब से हम लोग हर साल रिक्शा और पिकअप है, इको गाड़ी है और डीजल रिक्शा है, पेट्रोल रिक्शा है, ये सब हम लोग फ्री आने जाने का हम लोग सेवा देते हैं। कभी किसी से 1 रुपया पैसा लिया नहीं है। अच्छा, ये रिक्शा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये जगह से कल्याण बाग से शीतल मंदिर तक। कितने बजे? सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक। अच्छा, मतलब ये जाने के लिए सुविधा किया है कि आने जाने दोनों के लिए? ओके, आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि हर टाइम हम लोग ये जो सेवा करते थे और भी करने का हम लोग को मौका दीजिए जी। और हम लोग का क्यों पूरा है। પ્રફુલભાઈ પટેલ। જય શ્રી રામ। રિક્ષા આવવા જવા માટે ફ્રી રાખેલી છે તિથલ સાંઈબાબા મંદિરથી કલ્યાણબાગથી સાંઈબાબા મંદિર। સાંજે સવારથી સાંજે 8 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા લગી ફ્રી સેવાનું આયોજન રાખેલું છે। ફરી ભક્તોને છાશ બી રાખવામાં આવેલી છે। ત્યાં માટે હાજર બનો, લાભ લઈને જાઓ। જય શ્રી રામ।